Welcome to Vanik Smart Class, and here it is. We have another session on statement course of action. आम CSAT रो समस्त टॉपिक रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी रो समस्त टॉपिक वन बाय वन ए सेशन रे आमे कंटिन्यू करी चलीचु. आज रो टॉपिक अछि स्टेटमेंट कोर्स ऑफ एक्शन. देखिबा टिके सिलेबस रे कोन सब थिला आ से सब आमे को पर्यंत समाप्त करि सारणी. देखंतु ये समस्त टॉपिक आमे समाप्त करि सारिचु. ये समस्त टॉपिक समाप्त हो सारी अप टू स्टेटमेंट आर्गुमेंट रैंकिंग ऑर्डर assumption समाप्त हो सारी. Here it is the session now, statement course of action. So आमे आगो को बढ़िबा आ समस्त फंडामेंटल ये टॉपिक रो जानिबा तार क्वेश्चन मध्ये प्रैक्टिस करबा. जो माने भी ऑनलाइन अछंती से माने पार्टिसिपेट करंतु. The course of action is a what? The course of action is a step of administrative decision taken for improvement or follow-up action, and that may be a permanent solution as well. जानिबा दरकार स्टेटमेंट कोर्स ऑफ एक्शन रे जेते थरो आमे लक्ष्य करछु जेते थरो स्टेटमेंट रे दिया जायथिबा तथ्य गुडा को लक्ष्य करा जायछि से सब गोटे गोटे प्रॉब्लम गुडा. दैट मे बी एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम. दैट मे बी related to our personal life, that may be related to the problem with economical development, socio cultures, and any kind of that may be related to international trading, that may be strike war, that can be anything. There is no limit to write a problem. किंतु हमको कोर्स ऑफ एक्शन रे सजेस्टेड कोर्स ऑफ एक्शन माने जो थरे सॉल्यूशन थिबो ता माने एटा लिखा है. देखो कोर्स ऑफ एक्शन इज व्हाट? It's a kind of administrative decision taken for improvement or follow up action. ता माने सही प्रकार जो एक्शन दिया जायछि आमे जो एक्शन नबा सेथरे फॉलो अप हे परथुवो जिंसर आउरी बेटरमेंट हे परथुवो स्थिति को आउरी सुधार आनिया पई लेखा जायथिबा दरकार. एंड दैट मे बी अ परमानेंट सॉल्यूशन एज वेल. एक कथा लेखा जिवार कारण होछि समस्त प्रॉब्लम रो सॉल्यूशन एका संगे न होई पारे. समस्त प्रॉब्लम रो सॉल्यूशन परमानेंटली न होई पारे. तो से सब रो जो सब माने रिमेडीज आमे लिखिबा से सबुरे सेही स्थिति रो आउरी बेटरमेंट हे परुथिबो जेंति स्थिति सुधारिबा पई समस्त व्यवस्था ता भितर हेतिबो. इट्स अ काइंड ऑफ सजेशन. व्हाट आर द टेक्निक्स टू फाइंड आउट करेक्ट कोर्स ऑफ एक्शन? वेयर द प्रेजेंटेड सिचुएशन टॉक्स ऑफ अ प्रॉब्लम एंड द सजेस्टेड कोर्स ऑफ एक्शन टॉक्स ऑफ अ सॉल्यूशन. देखो एडी लिखा है मु जोटा बोल्ड करछि दैट इज वेरी मच इंपोर्टेंट. नंबर 2, वेयर द प्रेजेंटेड सिचुएशन टॉक्स ऑफ अ सिंपल फैक्ट and the suggested course of action suggest ways of improvement. मु एई कथा कहउतली फैक्ट रिलेटेड प्रॉब्लम. फैक्ट रिलेटेड प्रॉब्लम माने भाबंतो कि पॉपुलेशन इश्यूज, राइजिंग पॉपुलेशन, ये आकु हमें जदि गोटे प्रॉब्लम कहिबा ताले आर इंस्टेंट सॉल्यूशन इट्स क्वाइट डिफिकल्ट. रिलीजियन फीलिंग्स, कास्टिज्म इश्यूज, ये सबूर जहाँ भी सॉल्यूशन हबो ये सॉल्यूशन गुडा को गोटे स्ट्रोक रे सब सॉल्यूशन हबो. दैट मे नॉट बी हैपेंड. तो ये कथा बुझी जीवा दरकार केतेटा आम पाखरे प्रॉब्लम रहिछि किबा रहिबो आसंता समय जार इंस्टेंट सॉल्यूशन इट्स क्वाइट इम्पॉसिबल. तो आमे ताकू सेही स्थिति रो बेटरमेंट पाई प्लान करा जाई पारे. जदि सेते आमे बेटरमेंट रो संधान मिलुछि से सजेशंस रे ताले आमे निश्चित कहबा सेटा कि करेक्ट कोर्स ऑफ एक्शन होछि. किछ असुविधा नै. तो ध्यान देव समझते ये जो दीटा कंक्लूजन हमें ड्रॉ कले प्रॉब्लम सॉल्यूशन रिलेशनशिप एंड फैक्ट इंप्रूवमेंट रिलेशनशिप ये दीटा को जोड़िबा दरकार. एतर सॉल्यूशन थिबो इंप्रूवमेंट थिबो. जदि अछि ताले सेटा सजेस्टेड कोर्स ऑफ एक्शन हबो, अदरवाइज नॉट. जदि कोनोसी सजेशन रे हमें वायलेंस प्रमोट करूचे किबा हमें कोनोसी प्रकार सॉल्यूशन रे हमें सॉल्यूशन तो देइछे बट दैट इज नॉट इवन अ सॉल्यूशन रादर क्रिएट प्रॉब्लम्स. हमें जो सॉल्यूशन देइछे सेथिरे सॉल्यूशन जेतिक अछि ता सॉल्यूशन तो अछि ताठरो अधिका प्रॉब्लम अछि. ये समस्त जिंस को ध्यान देला परे जणा पड़े कि सजेस्टेड कोर्स ऑफ एक्शन रो माने होछि सजेशन रे हमें सॉल्यूशन देथिबा नै कि हमें कोनोसी स्थिति रो आउरी प्रॉब्लमेटिक आउरी थिबो आपनकर सॉल्यूशन रे सेटा कोनोसी प्रकार करेक्ट बा सजेस्टेड कोर्स ऑफ एक्शन को ग्रहण करा जिवो नाही. से माने सजेशन को करेक्ट कुआ जिवो नाही.
देखिवा नेक्स्ट हमको जो फ्लो चार्ट दिया ये फ्लो चार्ट भी समहाउ हमको आउ टिके माने हमरो डाउट क्लैरिटी पे हेल्पफुल हे पारिबो स्टेटमेंट कम प्रॉब्लम देखो मैं मेंशन कर दी प्रॉब्लम स्टेटमेंट इज नथिंग बट अ प्रॉब्लम एक्शन फॉर प्रॉब्लम सॉल्यूशन प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करिया पे जो एक्शन निया जायछि सेतरे रिड्यूस होउछि कि सॉल्व होउछि कि मिनिमाइज होउछि कि जदी यस देन चेक इफ इट इज अ बैलेंस्ड और पोस्टपोन्ड ता माने खाली सॉल्यूशन मिली गले हबनी ये सॉल्यूशन टा प्रॉब्लम को आउ थरे बढ़ावा दबार बा फर्दर बढ़ावा दबार जदि किछि प्रस्ताव रखिछि ता भितरे ताले जदि रखिछि जदि रखिनी ताले निश्चित भाव एक्सेप्ट बैलेंस्ड अछि यस देन एक्सेप्टेड माने प्रॉब्लम सॉल्यूशन को ये बैलेंस करछि यस एक्सेप्टेड नो रिजेक्टेड किंतु एटा रहि जीवनी कि सॉल्व करूछि मिनिमाइज करूछि तो संग संग हमें एक्सेप्ट कर देबो एटा समहाउ गलत ही पारे पुणी आउतरे रिड्यूस करूछि सॉल्व और मिनिमाइज्ड नो डायरेक्टली रिजेक्टेड ता माने एटी यस हला परे भी हमें ताको तर्जुमा करिया दरकार कि जहार सॉल्यूशन पे हमको कुहा जायछि लिटरली एटा सॉल्व होउछि ना नहीं से स्थिति रो आउरी माने एनहांसमेंट हेई पारुछि ना नहीं आउरी बेटरमेंट हेई पारुछि ना नहीं जदी होउनी ताले हमें ताको पुणी रिजेक्ट करिया को पड़िबो एक्शन फॉर इंप्रूवमेंट रिड्यूस सॉल्व और मिनिमाइज्ड यस does it help to improving the situation if yes then accepted if no then rejected very simple सही कथा हमें बार बार कहि सरछु आपन सामने रे अछि जनरल फॉर्मेट ऑफ क्वेश्चन इट्स अ काइंड ऑफ रियल प्रॉब्लम तो आमे कहबा जे सर स्टेटमेंट सब बडे एते कम इंफॉर्मेशन रे थिबा वाला स्टेटमेंट रहबो कि ऑब्वियसली आंसर इज नो एटा कोनोसी फॉर्मेट विषय आमे कथार्ता होछ ता माने एई स्टेटमेंट रो कोनोसी स्थिरता न थाए जे प्रॉब्लम को भलो भाबरे बुझी परिबो तार सॉल्यूशन आसीबार चांसेस सर्वाधिक थाए ए कथा भी बुझी जांदु भलो भाबरे ता माने मु जदी कोनोसी प्रॉब्लम रे निजो को कंप्लीट इन्वॉल्व करूची ता परे जणा पड़िबो जे ए प्रॉब्लम रो गंभीरता केते आरो डेप्थनेस केते एक्चुअल रे कोन सॉल्यूशन दरकार से कथा सेतबेले जणा पड़िबो जेतोले प्रॉब्लम रे मु निजो को इन्वॉल्व करी कि भाबिबी सेति पई इट्स अ वेरी जनरल सेंस इफ यू हैव the ability to get the problem properly then you are already in a solution ता माने मु गोटे मैथ्स रो क्वेश्चन को जदी भलो से बुझी परली ताले मते लागे कि 90% रो सॉल्यूशन हे की ही अछि केवल कैलकुलेशन और फॉर्मेलिटीज बाकी अछि एमिति केबे पॉसिबल कि इज इट पॉसिबल कि सर मु मैथ्स रो क्वेश्चन बुझी परलेनी किंतु आंसर एटा तो कोआ जीवो कि समय भलो अछि बोली ठीक हेछि किंतु एक्चुअल रे तार नॉलेज यूज हेनी तार इंटेलिजेंस यूज हेनी तार कॉमन सेंस यूज हेनी तो आमे प्रॉब्लम रे निजो को इन्वॉल्व करबा जो सॉल्यूशन से समय दरकार जदी से सॉल्यूशन लिखा जाइछि कोर्स ऑफ एक्शन रे ताले आमे ताको कहबा ठीक जदी लिखा जाइनी आमे ताको कहबा भूल ये हला मैक्सिमम कहानी स्टेटमेंट कोर्स ऑफ एक्शन रे एबे आमे क्वेश्चन सॉल्व करियो पले malaria has been spreading rapidly north part of Odisha anti mosquito liquid should be spread in that affected areas correct one malaria is a very dangerous disease it's a kind of awareness जोटा कि एबे दरकार नहीं एबे जे तू malaria spread करी चलची awareness can also be a course of action but that should be before the disease ता माने जेतोले disease start हेइनी से समय रे हमें लगातार awareness देई परिबा awareness को से समय रे गोटे course of action को आजिबो किंतु जदी एटा रैपिड स्प्रेड करूची कोनोसी प्रकार स्थिरता हेई परुनी सेतरे से समय रे अवेयरनेस दवा malaria is a very dangerous disease a kind of awareness so awareness before disease is never suggested so that's why this is wrong one wrong course of action number 1 is okay काहेकि ना इथरे solution रो बाटो देखा जाउची anti mosquito liquid it's a kind of solution that's why number 1 is okay so final answer is option number A only next a child was caught in a train while attempting to steal the jewelry of a respectable lady बहुत ही गंभीर समस्या कहीं ना चाइल्ड लिखाई एटा जदि एई टाइप रो एक्टिविटीज से लिप्त रहइबो ताले देशर भविष्य कोन होबो से कथा चिंता करा जाई पारे तो सेति पई तार कोन सॉल्यूशन दरकार देखो सेकंड टा कोन लिखाई जे द चाइल्ड शुड बी हैंडेड ओवर टू चाइल्ड वेलफेयर सोसाइटी बहुत ही बढ़िया जिंस लिखाई ता माने एटा जेतु गोटे चाइल्ड अछि सी ए टाइप रो एक्टिविटीज रे लिप्त रहुची माने सी ए टाइप रो एक्टिविटीज रे लिप्त रहिबार माने होउची कि से
निश्चित भाव में से टाइप रो खराब माहौल सहित संस्पर्श आसी खराब माहौल तामाने ताकर पेरेंट्स से टाइप एक्टिविटीज लिप्त थाई परंती तार सिबलिंग्स माने थाई परंती तार फ्रेंड सर्कल थाई परंती तार सोसाइटी थाई पारे तो जदि ताको गोटे भलो कोन दिया जीवो गोटे भलो माहौल दिया जीवो आमे ताको जदि गोटे सुस्थ परिवेश दे परिबा ताले से निज रास्ता को पुणी फेरी आसी पारे भलो हेई पारे र संधान एइतरे अछि कोडी ना कोडी सो नंबर 1 द चाइल्ड शुड बी सिवियरली बिटेन इट्स अ काइंड ऑफ हार्श एक्शन जेतोळे की कन्फर्मेशन नाही कि एटा तार भूल कि काहर भूल तो डायरेक्टली फिजिकल पनिशमेंट corporal punishment against a child is it's a kind of child abusing you can say or it's against human rights तो ताकू हमें केबे भी बढ़ावा दबा नहीं एक नंबर टा भूल हिसाब छी नंबर 2 इज ओके सो करेक्ट आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी जे तो बी रे लिखाई छी इफ ओनली 2 follows next it appears that within 2 or 3 years India will again face a severe BOP crisis BOP stands for balance of payment balance of payment आमाने भी जानिया दरकार balance of payment is the negative gap between export and import तामाने आमे import करि दैछे किनी दैछे अलगा देशरो 200 टंकार किंतु आमको एक्सपोर्ट कला बेलू आम पाखे जिनस अच्छी केते ना 100 टंकार जिनस अच्छी तामाने हमर एटी किनिले माने पेमेंट पार्टटा 200 टंका बिकिले माने इनकम पार्टटा 100 टंका जेतोले ए टाइप रो स्थिति आसुची निश्चित भाव रे लायबिलिटी डेवलप होए तामाने एसेट डेवलप होगा कथा जिते एक्सपोर्ट अधिक हबो इंपोर्ट कम हबो से समय से देश को वित्तशाली राष्ट्र कुआ जाय पारे किंतु जो माने डिपेंडेंट माने किणुचंदी अधिका से माने केबे भी गोटे वित्तशाली राष्ट्र कुआ जाय परिबो नाही जेमति कि हमर डेवलपिंग कंट्रीज माने डिपेंडेंसी अधिका सेति पई ताकर बैलेंस ऑफ पेमेंट रो जो प्रॉब्लम थाए सेटा सब बडे ओपन थाए तो बीओपी क्राइसिस एथरो सिवियर रही जड़ा पड़ुची कि 2-3 वर्ष भितर बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस सिवियर हो इंडिया शुड ऑफर स्पेशल इंसेंटिव्स टू इट्स एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज इंडिया शुड ऑफर स्पेशल इंसेंटिव्स टू इट्स एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज व्हाट डज इट मीन तामाने एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज जो माने अछंती तांकु जदी आउ टिके प्रमोट करा जाय ताले हमर एक्सपोर्ट पार्ट आउरी ग्रूम होबो एक्सपोर्ट पार्टा ग्रूम हेबार माने होउची आमे हमर स्थिति को आउरी सुधारछे ता माने एटा ठीक अछि वैट शुड बी वैट तो सेमति भी आउटडेटेड हे सलानी ए जगह जदी जीएसटी भी लेखा तांदा फिर भी एटा भूल हेतांदा बिकॉज़ जीएसटी और वैट यू कैन से इट्स नॉट डायरेक्टली रिलेटेड विथ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट इट्स अ कंजम्पशन टैक्स जोडा को हमें सर्विस आउ गुड्स कोडा को कंज्यूम करूछु बा यूज करूछु हमर डे टू डे लाइफ रे ता ऊपर जो टैक्सेशन होउची सेटा सेही टैक्सेशन को करूछु इट्स अ काइंड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स ऑफ कोर्स सो मु एटा को डायरेक्टली कनेक्ट करि परिबिनी कोनोसी प्रकार एक्सपोर्ट इंपोर्ट हां सेटा एक्साइज सॉरी सेंड जदि हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट रो टैक्स करबा ताले सेटा सेनवैट थाए सेंट्रल वैल्यू एडेड टैक्स नो दैट इज आल्सो नॉट इंपोर्ट एक्सपोर्ट रो टैक्स रे हमें एक्साइज को कोइ परिबो बहुत बड़े इंपोर्टेड प्रोडक्ट ऊपर एक्साइज ड्यूटी चार्ज होय ता परे आउरी कोन टैक्स थिबो जोडा कि मते भी कल्चर करिया पड़िबो वर्तमान पॉइंट है जे इंपोर्ट एक्सपोर्ट रो जो टैक्सेशन दैट इज नॉट डायरेक्टली रिलेटेड विथ वैट एंड जीएसटी सो नंबर 2 इज इनकरेक्ट वन सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इट इज द इनमेट्स ऑफ जेल एक्स आर वेरी डेंजरस पीपल 3 नंबर क्वेश्चन में पहुंच जाइजु The inmates of jail X are very dangerous people. More security personnel should be deployed to guard the jail. ठीक है किसी असुविधा नहीं जदि आमे आउरी सिक्योरिटी बढ़े देवा ताले से इनमेट्स माने जो माने सांग होई कि रहउचों अंतेवासी जो माने जेल रो से माने निश्चित भाव में आउरी सिक्योरिटी जदि तांकू दिया ही जाए सिक्योरिटी रे जदि रहबे कैमरा बढ़ाई दिया जीवो आउरी सिक्योरिटी पर्सनल रहबे ताले से माने
डेंजर तांकर बाय नेचर से माने डेंजर तेणुकरी तांकर डेंजर रे अलग केही क्षतिग्रस्त न होवा दरकार ताले एटा ठीक अछि कोट ना कोट some inmates should be shifted to a different jail. Shifting to different jail, it's nothing but to pass the problem without a solution. ता माने प्रॉब्लम को फेस करिया दरकार ना शिफ्ट करिया दरकार. दिस इज माय क्वेश्चन. तापरे एटा को शिफ्ट करिवाटा कोट ना कोट सेफ भी नुए. ए टाइप रा हार्डकोर क्रिमिनल जदी हितिवे ताले सेमान को शिफ्ट कला बळे सेमाने अलग अलग प्लान भी करि थाई पारंती बाटर किछि प्रॉब्लम क्रिएट करियार भी प्लान ही पारे. सो इथरे कोन जडा पुरची ना शिफ्टिंग इज नॉट अ परमानेंट सॉल्यूशन. एटी हमें सेही माने जेल रो जे जेलर अछंती सर्वोच्च पोजीशन रे जे थिबे तांकर कैलिबरिटी को भी कोटी ना कोटी माने अणदेखा करा जाउछि. सेथि पई हमें निश्चित भाव रे या ए पर्टिकुलर लाइन पई सचेतन रहबा दरकार कि एक्चुअल रे एटा शिफ्टिंग हवा निहाती दरकार कि सेमते किछि शब्द बा सेमते किछि स्थिति रो किछि एटी इंफॉर्मेशन दिया जायनि कि एक्चुअल रे समान शिफ्ट हवा दरकार. जेहेतु डेंजर पीपल ता द्वारा अलगा के क्षतिग्रस्त न होवा पई हमें सिक्योरिटी पर्सनल बढ़े दे पारिबा. सो नंबर 2 टा इनकरेक्ट को जिवो करेक्ट आंसर जिवो ए. आप परे पिले जो भी क्वेश्चन आसुची ताको सॉल्व करिया में ट्राई करन. मु 2 मिनिट लेखा टाइम दोउची 2 मिनिट्स आंसर कहबे जो माने भी ऑनलाइन अछंती ता परे हमें ताको सॉल्यूशन दिया. सो 2 मिनिट्स योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. समस्त निज हिसाब रे आंसर दियंतु जो माने भी ऑनलाइन अछंती सो दैट कि मु तारो रेक्टिफिकेशन करि परिबी आ डिस्कशन रो क्वालिटी मध्ये आउरी एनहांस होई परिबो. Okay, answer कहबा power supply on state X is terribly poor. The concerned authorities should immediately take measure to protect power theft, pilferage etc. Bypass hooking जोगु ही ए सब प्रॉब्लम देखा जाए. terribly poor माने almost negative. The government should buy excess power from the neighboring state. दीटा देखो ठीक अछि. correct answer है जो E. Next question. 2 minutes. The teenager were arrested by the police for taking drugs. बहुत ही serious कथा. The teenager should be meted with corporal punishment by the police. देखो corporal punishment रे solution होता है. Without repeated warning, we should not go for corporal punishment. ताको drug rehabilitation center को पठेले आउरी better. ताको भलो माहौल मिलिया दरकार.
So number 1 टा false ହେଇଯିବ, number 1 is wrong course of action and number 2 is correct. तापर जो माने ड्रग नियंती तांकु जदी कॉर्पोरल पनिशमेंट दिया जिवो से माने आउरी एरोगेंट हे जानती समस्त मु जाना थिबो ए विषय. Number B is the right answer because B is only true follows. Next. Two minutes you people have. Corruption has become rampant in our society. All corrupt persons should be brought to book. It's a time-taking and impractical course of action. समस्त corrupt person को investigation under को आनिबा समय सापेक्ष जिनस तो तापाई हमें ए कोर्स ऑफ एक्शन को करेक्ट करबानी. We should all strive to make our society corruption free. ट्राई करिबा, गिव अ ट्राई. एथरे कोनोसी कंक्रीट एविडेंस बा कंक्रीट माने बेस न थाए. एटा गोटे इमोशनल टाइप रो भी कोर्स ऑफ एक्शन ही पारे. कहबार अर्थ हमें चेष्टा करिबा उचित. चेष्टा करिबा इट्स अ काइंड ऑफ वॉग, uncleared attempt, uncleared things, uncleared substances. That's why we cannot make it correct. Number 2 is also wrong. Both are incorrect. Correct answer is option number D. Next question here it is. 2 minutes you people have. Flood may create havoc in the country this year too. तामाने ए वर्ष मध्य हमर जो फ्लड पाई जो प्रॉब्लम हुए सेटा ए वर्ष मध्य जना पड़ुची. ए वर्ष मध्य हेई पारे. The government should be on alert to evacuate flood affected victims is correct one. People should not be afraid of floods. इधर कौन सी solution नहीं. It's not a correct course of action. Natural calamities को भय करिबा उचित. ए लिखै should not be afraid. ता माने नो जी should be afraid लिखा इतले ठीक है दांदा. It's nothing like that. But somehow हमें ये कथा कहबा जे natural calamities को भय करनी आदरे किसी solution न था. It's again a kind of emotional course of action. So cannot be considered. Number 1 is okay. That's why correct. Number 1 is okay. A is the correct answer.
It is 2 minutes you people have. Okay, so here it is. The state government has decided to declare Kala-Azar as a notifiable disease under the Epidemics Act 1987. Family members or neighbors of the patient are liable to be punished in case they do not inform the state authorities. कला ज्वर बहुत ही सांघातिक थिला, महामारी ही जाउथला द्वारा कोनोसी गाँ भी समाप्त हो जिवार नजर अछि, सेतिपय आपको महामारी लिस्ट रे रखा जाइतला, महामारी नियम अधीन रे रखा जाइतला, ताकि जदि एमितिया कोनोसी डिजीज आसुची ताले स्टेट अथॉरिटीज को इन्फॉर्म कले सेटको रोका जिबा पय व्यवस्था करा जाय पारे. तो जदि न जणेबो ताले पनिशमेंट मिलियो बोली भी स्टेटमेंट रे जहा लिखा छै, एटा सत्य घटना लिखा जाय छै. कोर्स ऑफ एक्शन एफर्ट शुड बी मेड टू इफेक्टिवली इंप्लीमेंट द एक्ट. कोनोसी एक्ट को सम्मान दिया जाउची माने सेटा करेक्ट कोर्स ऑफ एक्शन हो. The cases of punishment should be propagated to mass media so that more people become aware of the stern action. ध्यान देवे जदि का को पनिशमेंट दिया जाउची, को कारण जो दिया जाइछि, केते परिमाण पनिशमेंट दिया गला, से विषय निश्चित भाव में जणेबा उचित लोक मानको, सो दैट लोक माने भी सेति की अवेयरनेस रहइबो, सेति की डरी की रहइबे कि कामटा एक्चुअली निहाती दरकार बोली. नहीं तो से माने ताको हिसाब रे डिजीज को क्योर करिया पे चाहिए जोटा कि ही न पारे. मेडिकल साइंस इट्स नॉट गेम ऑफ अ किड, दैट्स व्हाई. सो एटी हमें कौन कहबा ना दीटा जाक करेक्ट अछंती, सेति पे हमें आंसर कहबा ई, बोथ फॉलोज. हियर इट इज. नेक्स्ट क्वेश्चन, हियर इट इज क्वेश्चन नंबर 9. Every year at the beginning or at the end of the monsoons we have some cases of conjunctivitis. Conjunctivitis माने आखि धरार डिजीज जोटा थाए.
But this year it seems to be a major epidemic's weakness after nearly 4 years. Precautionary measures should be taken after every 4 years to check this epidemic. 4 ବର୍ଷରେ ଥରେ ଏପିଡେମିକ୍ସ को चेक କରିବାର जो କଥା କୁହାଯାଇଛି ସେଟା କଦାଚିତ ଗୋଟେ ସଜେଷ୍ଟେଡ୍ କୋର୍ସ ଅଫ୍ ଆକ୍ସନ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ. People should be advised to drink boiled water during winter season. This is also wrong one because there is no connection from boiled water to the conjunctivitis. This is not because of inhygienicness. This is highly contagious. ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ବହୁତ ରାପିଡ୍ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ କରିଯାଏ. ହଁ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ୟାକୁ ବଏଲ୍ଡ ୱାଟର ସହିତ କନେକ୍ଟ କରିବାଟା କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଭୁଲ କନେକ୍ସନ ବନୁଛି. ଏଥିରେ କୌଣସି କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନାହିଁ. ଦୁଇଟା ଯାକ ଭୁଲ ହେବା ପରେ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଡି. ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ହିୟର ଇଟ୍ ଇଜ. ନେକ୍ସଟ one. 2 minutes you people have to solve this question. A recent study shows that children below 5 die in the cities of the developing countries mainly of diarrhea and parasitic intestinal worms. तामाने यही सब related disease inhygienicness related disease जदि अपरिष्कार हेबे ताले ए टाइप रो स्थिति उपजिवो. निश्चित भाव पिला मानक पई लिखा हिची below 5 years in the cities they are dying because of this kind of disease. Government of the developing countries should take adequate measures to improve the hygienic condition of the cities. बिल्कुल जेहेतु एटा हाइजेनिक रिलेटेड डिजीज अछि इनहाइजेनिकनेस रिलेटेड डिजीज पई ताको इंप्रूवाइज करिया पई हाइजेनिक कंडीशन को इंप्रूवाइज करिया पई जहा दरकार सरकार ए पई पदक्षेप नबा उचित. Children below 5 years in the cities of the developing countries need to be brought under constant medication. Medication is after disease, after detection of the disease. That's why friends we cannot make it correct because any children below 5 years may not be contaminated or may not be with the same disease. जेकोनोसी पिला को मेडिकेशन 5 वर्ष कम माने मेडिकेशन इट्स अ काइंड ऑफ absurd course of action. Number 2 is wrong one, number 1 is okay. That's why correct answer is option number A. Next question को हम move करियो. Here it is next one. Total time allotted 3 minutes for 2 questions.
So let's go for the answers. One of the problems facing food processing industry is the irregular supply of raw materials to other industries also. The government should regulate the supply of raw materials for the food processing industry. But आमे अलग इंडस्ट्रीज भी यही प्रॉब्लम फेस करछि जोटि कि रॉ मटेरियल सप्लाई आपे असुविधा होछि तले एटा गुटे पार्ट दिया जाइछि कंप्लीट सॉल्यूशन नाही तो आमे ताको करेक्ट कोर्स ऑफ एक्शन कहबा द गवर्नमेंट शुड अनाउंस एन एक्टिविटी पैकेज टू एंश्योर रेगुलर सप्लाई of raw materials. The producers of raw materials are not getting a reasonable price. ठीक अछि तो जेतोले मनी मैटर करे ना से समय गवर्नमेंट रो इंटरफेरेंस रो आवश्यकता रही छी सो सेकंड दैट करेक्ट हो फास्ट हो सेटा बी हो मोस्ट ऑफ द डेवलपमेंट प्लान्स डेवलप पेपर ऑन पेपर ओनली केवल खाता कतियान रे सब रही जाउची किंतु एक्चुअल रे काम हो नाही the in charge should be instructed to supervise the field work regularly correct the supply of paper search department एटा कोनोसी प्रकार कांटेक्ट नै तो जते साइट विजिट हो प्रॉपर मॉनिटरिंग हो आमे काम को आउरी बेटर हो बोली एक्सपेक्ट करा जाय पारे जोटा कि 1 नंबर लिखा है ठीक अछि नंबर सो ए इज द आंसर 2 नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन 3 मिनट्स The availability of imported fruits has increased in the indigenous market and so the demand for indigenous fruits has been decreased. The availability of imported fruits has increased. जोड़ा बाहर आसुची तार चाहिदा अधिक अछि indigenous market and so the demand for indigenous fruits has been decreased. जोड़ा सब हमरो local market रे मिलुथिबा local fruits से गुडा करो चाहिदा कमी अछि काहेकि ना बाहर imported fruits गुडा को अधिक आछि कोन कोर्स ऑफ एक्शन नै To help the indigenous producers of fruits, the government should impose high import duty on these fruits, even if they are not good so quality. Harsh decision होची एटा केबे कोनोसी क्रिएटिव मार्केटर रो प्लान हेई न पारे क्रिएटिव मार्केट जे रेगुलेटर अछि से सबले विन विन सिचुएशन क्रिएट करिया ପାଇଁ चाहे निजरो फायदा थिबो प्रोड्यूसर रो फायदा थिबो इंपोर्टर रो फायदा थिबो बायर रो फायदा थिबो सेलर रो फायदा थिबो समस्त रो फायदा देखिया को पड़े सो दैट मार्केट रो सस्टेनेबिलिटी बहुत अधिक रहबो एंती नै कि निजे टैक्स इंपोज करले आ चलले ता परे आ मार्केट रन करि परला नै तो एटा बहुत बडो लॉस होय लॉन्ग टर्म लॉस हो द फ्रूट वेंडर शुड स्टॉप सेलिंग इंपोर्टेड फ्रूट्स so that the demand for indigenous fruit should be increased. The fruit vendor should stop selling imported fruit. ये भी harsh type of decision है ता माने दुईटा जाको इतरे भूल होबो डी हिजबो करेक्ट आंसर एटा जो माने वेंडर्स अछंती से माने इंपोर्टेड अच्छा एटा सेलर पय लिखाई छी वेंडर्स माने जो माने सेल इंपोर्टेड नहीं सेल करिया पय लिखा दिवाटा ही भूल जदि आमर चाहिदा कम करते ता माने सेलर पय जदि लिखाई तांता जो बायर पय जदि लिखाई तांता कस्टमर पय जदि लिखाई तांता कि से माने समनकर डिमांड ता इंडिजिनियस फ्रूट ऊपर को फास्ट आनते ताले कोटी ना कोटी जिंस ऊपर गोटे भलो प्लान हे पारि थांता आमे कहबा कि आमे यूज करिया पे हमको जिंस दरकार साडा आमे कहबा जे हमर इंपोर्ट करले ता ऊपर हाई टैक्सेशन करंतु एटा कोटी ना कोटी इंबैलेंस मार्केट करी
तो आम एमती बहुत गुड़े डेभलप कंट्रीज अच्छा जो मैंने इनफ्लेशन को कंट्रोल करने से माने साधारण लोक भी भितर इनवॉल्व हो जाती इनफ्लेशन को कंट्रोल करने से सपोज कौन प्रोडक्ट रो दामटा बहुत अधिका बढ़ुची ताने से किणवा ही कमी दियंती बट इंडिया कल्चर अलग जार दाम अधिका बढ़ुची अधिका किणा जाए सो इनफ्लेशन टा हाई पॉइंट को आसी जाए तो से वेंडर्स मानकर एक्टिविटीज रे मत लगुनि किसी इंपैक्ट आसो एमाने जदि बंद करिए एमाने ताकर प्रॉफिट में ही काम करूछंती तो अल्टीमेट एंड यूजर जे अछंती ताकर डिमांड जदि कमिला इंपोर्टेड फ्रूट्स ऊपर ताले निश्चित भाव में मार्केट डिमांड करिवो इंडिजिनियस फ्रूट्स ऊपर आउ धीरे धीरे मार्केट स्टेबलाइज हेबो लोकल जो माने प्रोड्यूसर्स अछंती से माने प्रॉफिटेबल हेबे तो मूल जिंस होला जे किणुछंती ताको ऊपर नजर थिबा दरकार थिला बट इटी वेंडर लिखाई छै वेंडर माने सेल बंद कर देवा उचित जेतोल कि डिमांड ही अधिका थिबो तो सी सेल बंद कले कोन हो तो दीटा जाक फॉल्स हिजबो a group of school students was reported to be enjoying in a picnic spot during school hour रे पिकनिक एन्जॉय करछन निहाती गोटे भूल जिंसो बट एते बडो सांघातिक भूल हो जे कि क्रिमिनल एक्टिविटीज रे माने भूल कर दैछन the principal should contact the parents and the student and tell them about the incident with a real warning for the future बहुत बढ़िया अछि फास्ट गाइडेंस किए पेरेंट्स ताको इंफॉर्मेशन दे दो उचित some disciplinary action must be taken against those students and all other students should be made aware of it डिसिप्लिनरी एक्शन माने जो थरे की सामना वाला पनिशमेंट भी पाइबो जो पनिशमेंट रे तारा फायदा होतो समस्त चारिटा असाइनमेंट सॉल्व करिवे जे पिकनिक रे भाग नैथिले से माने 6टा असाइनमेंट सॉल्व करिवे अदरवाइज से माने को आउरी पनिशमेंट दिया जिवो त माने एटा गोटे डिसिप्लिनरी एक्शन मु कहि कि ये अधिक असाइनमेंट भी सॉल्व कला जो थरे तार किछ लॉस हेनी तो ये जो पनिशमेंट अच्छी स्टूडेंट पे से पनिशमेंट विषय जानिया दरकार कि से तार फायदा हवा दरकार एमती नहीं कि जो थरे तार लॉस होची से तो तार किछि बेनिफिट हलानी तो आमे आ क्रिएटिव कोन हला टीचर क्रिएटिव कोन हला ओ माने स्कूल रो अथॉरिटीज कोन माने प्रॉब्लम हला माने से माने केते क्रिएटिव बोली जणा पड़ला ई कथा तो पनिशमेंट एमते दियंतु जेमति कि से कोटी ना कोटी फायदा रे रहतो सो दुईटा जाको ठीक अछि आंसर इज वो ई नेक्स्ट क्वेश्चन को हम मूव करियो हियर इट इज नेक्स्ट वन 3 मिनट्स Okay, footpaths of a busy road are crowded with vendors selling cheap items. The help of police should be sought to drive them away. बहुत बढ़िया जिंस तामाने हमर ए जो प्रॉब्लम टा हमें परिलक्षित करूचे स्टेटमेंट रे एटा निश्चित भाव गोटे पब्लिक रिलेटेड प्रॉब्लम मतलब आपण सॉल्व करियो उचित ताको पब्लिकली तामाने कथा है जे पब्लिक रो रिप्रेजेंटेटिव जे अछंती जे गार्ड अछंती पब्लिक गार्ड इज पुलिस सेतिमें हमें ताको हस्तांतर करियो उचित प्रॉब्लम टा पर्सनली सॉल्व करियो उचित नुहे पर्सनल प्रॉब्लम के पब्लिक रिलेटेड प्रॉब्लम के पर्सनली सॉल्व करियो उचित नुहे some space should be provided to them where they can earn their bread without blocking footpaths is also correct one ता सरकार को गोटे मेसेज दिया जाइछि काहे कि ना समस्त रोजी रोटी पे समस्त अधिकार अछि
तो सेमानकु उपयुक्त प्लेस रे थैथान करिवार दायित्व रही सरकार रो से मार्केट रे उपलफेड बनेवा मार्केट कॉम्प्लेक्स बनेवा ये सब बनेकी सेमानकु माने रास्ता ब्लॉक न करी सेमाने तांकर रोजी रोटी इनकम करि परिबे फैमिली मैटर्स दिस इज दैट्स व्हाई सो एटा कोडी ना कोडी दीटा एको ठीक है सर चिपिले करेक्ट आंसर इज ई the sale of a particular product gone down considerably causing great concern to the company कोन से पर्टिकुलर प्रोडक्ट गोटे कमी चलची तार सेल लोक पसंद करूनी ता माने the company should make a proper study of rival products in the market तार जे कंपिटिटर अछि ता विषय निश्चित भाव रे अनुधान करबा उचित निश्चित भाव रे रिसर्च करबा उचित कि समान प्रोडक्ट बना होची तार बिक्री होची मोर बिक्री होनी निश्चित भाव रे एटा समान नुहे तार किछि खूबिया अधिका अछि तार किछि ना किछि एक्स्ट्रा जिंस रहउची जोटा कि लोक पसंद करछि नवा पई the price of the product should be reduced एटा करेक्ट कोर्स ऑफ एक्शन हबनी जेतो प्राइस अधिका थिला सेटार कोनोसी मंतव्य एटी दिया जायनी इंफॉर्मेशन दिया जायनी सेति में हमें डायरेक्टली प्राइस कम करवाटा गोटे करेक्ट कोर्स ऑफ एक्शन नहि पारे सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए आ आज मध्य एटी हमें समाप्त करूछु हमर सेशन पुणी देखाबो नुवा टॉपिक सहित धन्यवाद।